So इस वीडियो का मकसद ये है कि we want to look at some of the pros and cons, some of the strengths and weaknesses of the naive Bayes algorithm. Although कि हम ये काम साथ साथ करते आ रहे हैं और हम मुख्तलिफ जगहों पर ये strengths और weaknesses देख रहे हैं, लेकिन कुछ और interesting इसकी strengths और weaknesses हैं जो इस point पर और ज़्यादा apparent हो रही हैं. So I want to discuss them as part of this video and see के how these impact the outcomes of the algorithm, and we should be aware of these things के ये मसले जो हैं ये हमें आ सकते हैं. So let's begin. So let's begin with an example. और ये again spam detection की example है and it's taken from Victor Lavrenco's video ये जो नीचे जिसका मैंने link दिया हुआ है. So let's look at this example. Let's say we have these six emails जो D1 से लेकर D6 तक जो कि mark हुई हुई हैं कि वो spam है या ham है. ठीक है, so we have like send us your password and send us your review and review your password and review us, send your password, send us your account and so on. And then we have now a test email which is saying review us now और हमने इसका लेबल बताना है कि ये क्या है. We already can see कि ये now जो है वो इसमें appear नहीं होता, ये किसी भी हमारे ट्रेनिंग डेटा में नहीं आया, तो लिहाजा जैसे हमने पहले सीखा था कि इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा. तो सिर्फ ये review us रह जाएगा जिसकी हमें जिसको असाइन करना है या लेबल spam का या ham का. So we proceed with the usual route. We find the priors, we find our counts, and we find the different counts of these words in both. So हमारे पास 13 words in total हैं, 13 tokens हमारे पास हैं in the spam class, and we have 7 tokens in the ham class. So spam के अंदर password 2 दफ़ा आया है, review 1 दफ़ा आया है, send 3 दफ़ा आया, and so on. So we find all of these counts. ये आपको अब तक अच्छी तरह मालूम है. You do this for the whole vocabulary. In this case the vocabulary is just all of these words, and now based on this you try to find your probabilities. So the probability of spam given this test email is equal to the probability of spam into the probability of review given spam into the probability of us given spam. Now आपने बीच में से ignore कर दिया and you get this 0.01183, and then you find out this for the ham class and you get your 0.0136. So अगर हम ये देखें तो इसमें clearly the second one is a winner. So it looks very naive है ना, कोई मसला नहीं है यहाँ तक. But if you look at it carefully, there is a big mistake which has happened here. Apparently a mistake. और वो mistake क्या है? जो चीज़ आप search कर रहे थे reviewers, वो actually मौजूद है आपके training data में और उसकी क्लास स्पैम है, जबकि इन दी एंड जो क्लास हमने असाइन की है अपने टेस्ट पॉइंट को वो हैम है. ये क्या हुआ? Why didn't it give weight to the fact कि ये चीज़ तो एज सच आपके ट्रेनिंग डेटा में पड़ी हुई थी और इसकी क्लास दूसरी वाली थी? यहाँ पर क्या हुआ? एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इज, अगर आप गौर करें, हुआ सिर्फ इतना है कि आपके पास हैम के अंदर रिव्यू की अक्रेंसेस ज़्यादा हैं, जबकि अस की अक्रेंसेस जो हैं वो स्पैम के अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी टिल्ट हो गई इन द फेवर ऑफ हैम. बट द बिगेस्ट पॉइंट व्हाई दिस हैज़ हैपेंड, अगर आप गौर करें, वो ये है कि बिकॉज नाइव बेस ट्रीट्स ईच फीचर एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, तो लिहाजा इट डजंट केयर कि अगर रिव्यू अस दोनों के दोनों इकट्ठे आ चुके हैं, इट डजंट केयर फॉर दिस. इसको सिर्फ इस बात की परवाह है कि रिव्यू कितनी दफ़ा आया और अस कितनी दफ़ा आया. इट्स लुकिंग एट दीज एज इंडिविजुअल फीचर्स, which means that this opens up a portal of fooling naive Bayes. So you create a spam email. Please don't. I'm not teaching you how to write a spam email. I kind of am. I'm not promoting spam email. I'm just telling you this problem with naive Bayes. अगर naive Bayes classifier spam detection पे लगा हुआ है, all you need to do is write your spam email जिसमें आपको investment opportunity दे रहे होंगे या कुछ बेच रहे होंगे या कोई diamond mine आपकी होगी जिसमें आप अगले से पैसे मांग रहे होंगे कि आप मुझे $2000 भेज दें तो मैं आपको $25 लाख भेज रहा हूँ और whatever. उस केस में probably you'll be a wealthy woman living in some part of Africa usually. So I go through my spam emails very carefully. Apparently I should not, but anyhow. So उसके नीचे spam email के नीचे all you need to do is you need to write out a list of a lot of non-spammy words. So जितने आपने ऊपर spammy words डाले हैं उससे ज़्यादा आप non-spammy words डाल दें, बेशक white font में डाल दें ताकि वो गायब हो जाए. And this is actually some of the tricks which were used in early days of spam.
जिस वक्त हम बहुत सिंपल एल्गोरिथम्स के थ्रू स्पैम डिटेक्शन करते थे। और उससे क्या होगा कि दिस होल स्कोर विल टिल्ट इन द फेवर ऑफ नॉन स्पैम एंड नॉन स्पैम विल विन, एंड द पर्सन जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसको आपकी स्पैम ईमेल पहुंच जाएगी, उसके फिल्टर से वो निकल जाएगी। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद योर नाइव बेस्ड एल्गोरिथम, दिस इज द इंडिपेंडेंस अजम्पशन प्रॉब्लम। इसी अजम्पशन को अगर हम गाउसियन के ऊपर लगा कर देखें, अगर हमारे पास इस तरह का एक डेटा सेट है, यहाँ पर जो रेड पॉइंट्स हैं ये लेट्स अज्यूम एक क्लास है और जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये दूसरी क्लास है। इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का जो असल में डिस्ट्रीब्यूशंस ये वाली हैं, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन सेम है, मीन इनका तकरीबन एक ही जगह के ऊपर है, और इनकी जो जो वेरिएंस है वो भी सेम है। The only difference is in the covariance, the way the features are correlated. One of them is positively correlated and the other one is negatively correlated with the output class. ठीक है, इस चीज़ के तो आप माहिर हो चुके हैं ना, ये तो आपको विजुअली देखकर करना आता है। Because हम नाइव बेस के अंदर इग्नोर करते हैं कोवेरियंसेस को, यानी फीचर 1 गिवन फीचर 2 वाली चीज़ को हम नहीं देख रहे होते हैं, हम कोवेरियंसेस को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम कोरिलेशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं। वी एज्यूम अ नाइव इंडिपेंडेंस अमंग्स्ट द फीचर्स। देयरफॉर जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये वाले सर्कुलर लाइंस होंगी जो आपके पास बनी हुई हैं। That means कि naive Bayes would not be able to distinguish between these two classes. अगर covariance is the only feature, is the only attribute that discriminates between your classes, then naive Bayes will not be able to capture this. अच्छा, दो weaknesses या एक weakness हो गई, अब हम इसकी एक strength की बात भी कर लेते हैं। So let's talk about this. What if you have missing data points? So let's start with an example. लेट्स एज्यूम कि मेरे पास मैं 3 कॉइन टॉसेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल भी बाय द वे विक्टर लेवरेंको की वीडियो से आ रही है। सो लेट्स से आई एम डूइंग 3 कॉइन टॉसेस। सो देयर इज एन इवेंट 1, द फर्स्ट कॉइन टॉस, लेट्स से उसमें हेड आया। उसके बाद मैंने कॉइन टॉस किया तो कॉइन जो है वो जाकर कहीं गिर गया और मुझे मिला नहीं, और मुझे नहीं पता लगा कि उसमें क्या आया, ठीक है। जब मैंने उठाया तो वो तब तक पलटा जा चुका था और वो जाकर मिला, लेट्स से गटर में गिर गया था और किसी ने उसे निकाल के मुझे पकड़ाया धोकर साफ करके, तो आई नेवर न्यू कि उसमें हेड आया था या टेल आया था। And then and then I take the coin again and I toss it again after cleaning it and making sure कि वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुका है, and I get a tail. So I have a missing event, I have a missing feature value. How would you calculate the probability of this event now? You would need to assume both classes, and then you need to find out the total probability for these two quantum classes, for these two states. एक वो state जिसमें आपका जो central missing event है वो head था और दूसरा जिसमें वो tail था। Because naive Bayes की assumption में आप independence assume करते हैं, लिहाजा this is going to be converted into probability of head into probability of head into probability of tail, and the second one would be probability of head into probability of tail into probability of tail, ठीक है। तो ये जो दरमियान वाली चीज़ है ना, ये वो है जहाँ पे आपने इसकी दोनों वैल्यूज एज्यूम करनी है और इस पूरी चीज़ का सम ढूंढ रहे हैं। इसमें से इन दोनों चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, राइट। जो चीज़ आपके पास बच जाएगी वो सिर्फ ये दो चीज़ें बच जाएंगी। And if you look at this carefully, the probability of head plus probability of tail for this second event, this sums to 1. Obviously, that's the total probability. So, in fact, आपने इसको ignore कर दिया. It becomes a dispensable case. It becomes a no care, a don't care event. ठीक है, तो लिहाजा आपकी जो पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आप सिर्फ इन दो से अखज़ कर रहे हैं और करेक्टली अखज़ कर रहे हैं। सो दिस लीड्स टू नाइव बेस बीइंग अ रियली स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम इन केस ऑफ मिसिंग वैल्यूज फॉर द फीचर। सो सपोज कि हमारे पास एक फीचर है XJ जिसकी वैल्यू मिसिंग है एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए, या हमारे लेट्स से टेस्ट डेटा के अंदर इसकी वैल्यू मिसिंग है। तो व्हाट डू? You basically take this, you convert it into this form, and then you apply using the naive Bayes assumption, and now you essentially need to sum this whole thing up over all values of xj, जैसे कि ऊपर हमने किया था। So xj की सारी possible values, जितनी भी इसकी values थी, let's assume कि discrete valued feature था या continuous था तो bind feature था, whatever, इसकी सारी possible bins के ऊपर, सारी possible values के ऊपर आपने इसको sum करना है। So once you sum it over all values, ये सब का सब बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका xj से कोई ताल्लुक नहीं है, और सिर्फ xj की वाली चीज़ बीच में रह जाएगी। And once you sum up over xj, it comes out to be 1. So essentially what we're saying is, if there is any feature value which is missing, just ignore it and you're fine. आपकी probabilities पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So
this resilience of naive Bayes to missing values of your features is actually a pretty big strength. और ये हर एल्गोरिदम के पास नहीं होती, नाइव बेस के पास ये है. तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को. वंस यू आर यूजिंग दिस एल्गोरिदम समवेयर यू शुड बी वेरी वेल अवेयर, क्योंकि खाली ये नाइव बेस खुद नहीं यूज़ होता, इसकी बेस के ऊपर बहुत से एल्गोरिदम है जो बने हुए हैं और वो सब इसकी फिर इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इनहेरिट कर रहे होते हैं.